Students, I am Dr. D.P. Singh and we are studying Gauss divergence theorem. The question: based on divergence theorem for any surface S, prove that double integration curl f dot n ds equals to 0. Solution: Gauss divergence theorem. Del dot f divergence f dv equals to f dot n ds. Here function equals to curl f, double integration curl f dot n ds equals to triple integration del dot del curl f dv और del dot del cross f dv equals to 0. Curl f dot n ds equals to 0. Second question. Next, if question 2, if f equals to axi byj cz के abc are constants, so that f dot n ds 4 pi upon 3 a plus b plus c. Solution: divergence theorem. F dot n ds del dot f into dv. Where S is sphere, S is the surface of unit sphere, that is surface, that is volume. Del dot f del dot ax I byj plus cz के into dv. Del dot f del upon del x ax del upon del y by del upon del z
सी जेड इंटू डी वी। ए प्लस बी प्लस सी डी वी, ए प्लस बी प्लस सी ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। रेडियस 1 इज 4π/3 r क्यूब इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 4π/3 ए प्लस बी प्लस सी। एफ डॉट एन डी एस। Students, that is the question statement function to be given and prove so that double integration f dot n ds equals to 4π/3 into a plus b plus c, where surface S is a unit sphere, divergence theorem, that is divergence theorem, double integration f dot n ds equals to triple integration del dot f dv, and putting the value of f divergence of axi plus byj plus cz के इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स f1 प्लस डेल अपॉन डेल y f2 प्लस डेल अपॉन डेल z f3, f1 ax f2 by f3 cz, differentiating partially with respect to x, y and z respectively, then a plus b plus c into triple integration dv, that is the volume of unit sphere means radius 1, volume of sphere 4π/3 into r cube, r means 1, that is the solution of this question 4π/3 into a plus b plus c. Next question of divergence theorem. By transforming to triple integral evaluate I equals to double integration x cube dy dz x square by dz dx x square z dx dy, where S is closed, closed surface bounded by planes z equals to 0, z equals to b and cylinder. X square plus y square equals to a square. That is the question. Transforming to triple integral evaluate the double integration by the method of triple integration, converting by divergence theorem. I equals to x square dy dz
एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई, और वी में राइट एज डबल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आई एक्स स्क्वायर बाई जे एक्स स्क्वायर जेड के डॉट एन डी एस। एफ इक्वल्स टू एक्स क्यूब आई एक्स स्क्वायर बाई जे एक्स स्क्वायर जेड के, वेयर एफ इक्वल्स टू दिस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ इंटू डी वी। एफ डॉट एन डी एस मीन्स एक्स क्यूब डी वाई डी जेड एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू डेल डॉट एफ डेल अपॉन डेल एक्स क्यूब डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर जेड इंटू डी वी। जेड इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू बी एंड सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। If y equals to 0, then x equals to plus minus a, or y equals to plus minus root a square minus x square. That's the limits. X cube dy dz x square y dz dx x square z dx dy equals to z equals to 0 to b, x equals to minus a to plus a, y equals to minus root a square minus x square root a square minus x square 3x square plus x square into dz dx dy. Z equals to 0 to b, x equals to minus a to plus a, y equals to minus root a square minus x square to root a square minus x square 5x square dy dx dz. Integrating with respect to y, even function z equals to 0 to b, x equals to minus a to plus a 2, y equals to 0 to root a square minus x square dy dx dz 2 into 5 into 2 by the property of definite integral 5 to the 10 z equals 0 to b and x square integration of dy by
0 to root a square minus x square dx dz equals to 10 z equals to 0 to b x square root x equals to minus a to plus a x square root a square minus x square dx dz. Students, that is integration of with respect to x, that is function even function. Ten into 2 z equals 0 to b x equals to 0 to a x square root a square minus x square dx dz. Let x equals to a sin theta dx equals to a cos theta d theta when x tends to 0, theta tends to 0. When x tends to a, then theta equals to pi by 2. X equals to a sin theta 1, theta pi by 2. 20 z equals to 0 to b, theta equals to 0 to pi by 2, and x a sin theta whole square root a square minus a square sin square theta into a cos theta d theta. z equals 0 to b 0 to pi by 2 a square sin square theta a cos theta into a cos theta d theta. 20 a4 z equals 0 to b theta equals 0 to pi by 2 sin square theta cos square theta d theta. Now we are applying Wallis formula to solve this integral. 20 a4 z equals to 0 to b gamma 3 by 2 gamma 3 by 2 2 gamma 2 plus 2 upon 2 into dz 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 dz. Gamma formula Wallis function, Wallis formula gamma n equals to 2 m equals to 2 n equals to 2 gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 upon 2 gamma m plus n plus 2 upon 2. That is Wallis formula when the function in the form of sin to the power m theta cos to the power n theta and limit goes to 0 to pi by 2. Then we can apply this Wallis formula and simplifying 20 a4 z equals 0 to b 1 by 2 root pi 1 by 2 root pi upon 2 plus 2 plus 2 4 2 plus 2 plus 2 6 by 2 3 gamma 3 means factorial 2 into 1 into dz. One upon 2 into root pi 2 2 is 4 5 a4 upon a4 pi upon 4 z equals 0 to b
dz 50 pi by 4 a4 0 to b a4b. The solution of this question by the help of divergence theorem, that's all.